ए, क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही? हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। सो गाइस, ये था। अब मतलब सो वेल, हेलो गाइस, क्या हाल चाल है दोस्तों? मेरा नाम है निंजा भाई। आज का स्ट्रीमिंग जो है सिर्फ खाली छोटी मोटी मिशंस के थ्रू होंगे। और अगर टाइम मिला तो और अगर टाइम मिला तो मैं ये जो है, सॉरी, क्या कर रहा हूँ। हाँ, ये जो ओल्ड नोट्स न्यू फ्रेंड वाला जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार, क्वेस्ट है, इसको मैं कंप्लीट करूंगा, ट्राई करूंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं कि इसमें वहां जाना, यहाँ जाना, ऐसा जाना, वैसा जाना, पत्थर ढूंढना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अरे रेगिस्तान में तो पूरा का पूरा ये देखो, ये किधर है रेगिस्तान बाबा? इस पूरे रेगिस्तान में हमें यहाँ पर कहीं तो भी जाकर इसका पूरा भूल भुलैया का चक्कर काट के इधर वापस आना जी। सॉरी, हैदराबादी स्टाइल बोलने के लिए सॉरी। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वो बहुत ही लीनियंट और मस्ती टाइप का लगता है। बहुत ही अच्छा, प्यारा प्यारा स्टाइल है एकदम, बहुत ही प्यारा और कॉमेडी जैसा लगता है। मजा आता है उस बोलने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? और ऊपर से मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है। उनको वही स्टाइल में ज्यादातर बात करती है, हिंदी, क्योंकि उन्हें हिंदी बोलना उतना परफेक्टली नहीं आता जितना मुझे आता है। तो यार जाने दो ना, मम्मी को जाने दो, तो कुछ देर के लिए बोल देते सॉरी मम्मी जी। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इस गेम में हमें यहाँ पर कुछ यहाँ पर रेगिस्तान में जाकर अंडरग्राउंड होके पूरा का पूरा छानबीन करते हुए, तो कहाँ से, हाँ यहाँ पर, इस जगह से, ये जहाँ पर है ये वाला, ओके, जहाँ पर मैंने मार्क किया है, वहाँ के अंदर अंडरग्राउंड होके पूरा का पूरा इधर पूरा चक्करा काटना। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या मिलता है, किस तरीके का क्या चलता है, कुछ समझ नहीं आता मुझे, क्योंकि उसमें सिर्फ ढूंढना पड़ता है और ऊपर से कुछ चीजें जो है वहां पर असेंबल करना पड़ता है। इसलिए उससे पहले छोटी छोटी जो मिशन है, ये क्या बोलते हैं, हाँ, ये वाले जो छोटे मोटे मिशन है उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है वो थोड़ा सा लेवल अप हो जाए, ठीक है? तो चलो चलते हैं मिशन करने के लिए। यार देरी क्यों करें, अभी थोड़ी देर के लिए ओल्ड नोट को बोल देते हैं, बा बेटा आप थोड़ी देर के बाद आओ ना, इधर बहुत काम आ पड़ा। चलो वहाँ सामने ही है, तुम्हें पहले से ही आ चुका था। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग इससे थोड़ा बात कर लेते हैं। वन टू डाउन, ठीक है, इससे बात करते हैं। हेलो, व्हाट डू यू वांट रिगार्डिंग दिस पिजन? पिजन, सॉरी, पिजन पिजन पिजन, वाइल्ड मशरूम्स। If you have time, maybe you could hurry along the pigeons. I wish to release it, but oh, chase them away. तो यानी मतलब कि कबूतरों को जो है हमें संभालना पड़ेगा। क्या बात है, कबूतरों को संभालना पड़ेगा? संभालना है कि भगाना है? कंफ्यूजन में मैं बैठा हूँ। वो रहे कबूतर। अरे इनको कलेक्ट करना है। अरे मशरूम मुझे बहुत पसंद है यार। इसका जो एक तरीके का फूड आता है जो यहाँ पर जो है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इनको भी मारना पड़ेगा।
आओ आओ इसी तरह क्या कराया लिंक का तबाही इसका हाई लेवल डैमेज नहीं है मगर सॉरी बबुआ पिजन सारे मेरे कबूतर के चिकन बन गए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ठीक है वैसे भी गेम है ठीक है कैजुअली लेना चाहिए दिल को ना लो तो मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद आता है क्रिएशन बल्कि उन्हें पालने में ठीक है पालने में मुझे बहुत पसंद है बहुत क्यूट होते हैं यार वो कबूतर बिल्लियां और खास करके कुत्ते तो बहुत प्यारे लगते हैं मुझे डर भी लगता है यार क्योंकि कभी काट लिया तो सुने यार बहुत खतरनाक होते हैं ये देखो अभी भी देखो इसमें इसमें भी एक एनिमल है मेरे पास कहाँ गया वो एनिमल एनिमल ये देखो और ये भी है लोमड़ी और ये बिल्ली कितना प्यारा है बिल्लियाँ बहुत प्यारी होती है बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ मुझे उसमें बहुत पसंद है बहुत क्यूट है चलो जाने दो हाँ अच्छा हुआ क्या रखे इसे ऑटो प्ले होने दूंगा ताकि आप लोग को भी करेक्टली समझ आ सके कि बोल क्या है क्या कैबेज मुझे वो वाला चाहिए इसलिए मुझे इसे अपग्रेड ये नहीं नहीं इसके लिए नहीं चाहिए वो इसके लिए सब रेडी है शायद बारबरा हाँ बारबरा इसके लिए भी चाहिए क्या नहीं इसके लिए नहीं इसके लिए भी नहीं तो इसके लिए शायद होगा नहीं इसके लिए तो कभी नहीं इसके लिए होगा शायद नहीं तो किसके लिए वो दूसरा एक और भी इसके लिए क्या नहीं लगता तो इसी के लिए नहीं इसके लिए भी नहीं नहीं इसको भी अपग्रेड कर सकता हूँ कहीं मैं बोलूँ तो लीसा बहुत पावरफुल है मगर मुझे इतना फायदेमंद नहीं लगता क्योंकि ये क्लोज रेंज अटैक बहुत करती है मगर लॉन्ग रेंज और मिड रेंज और ये भी मैं क्लोज रेंज वाले ज्यादा यूज करता हूँ मगर लीसा उतना ज्यादा यूज नहीं करती मगर हाँ ये कुछ सारा बहुत ज्यादा ही पसंद है इसका तीरंदाज और स्टाइल वगैरह बहुत पसंद है इसलिए मैं उसे अपग्रेड कर रहा हूँ और फिर उसके बाद अभी लोग भाई तो इधर बैठे हैं तो एक काम कर देता हूँ शैंगलिंग को ना थोड़ा कुछ दिन के लिए आराम करने दे देता हूँ और इसको इस्तेमाल करूँगा इसको अपग्रेड करके ठीक है क्योंकि इसका वेपन भी वैसे ही है ड्रैगन स्पीयर यानी कि मतलब कि कुल हिसाब से ये वाला स्पीयर जो है ये शैंगलिंग यूज करती है ठीक है और ये वाला जो ड्रैगन स्पीयर है ये चीज वो लड़की करती है अब इसे अपग्रेड करना चाहता हूँ मगर उसके पास मेरे पास ये नहीं ठीक है और इसके लिए मुझे संडे तक वेट करना पड़ेगा मतलब कल तक कोई बात नहीं मैं कल तक हो जाएगा मेरा और अभी क्या छोटे मोटे मिशंस कर रहा हूँ चलो एक सेकंड बोल 5 लोगों 8 लोगों पहले 8 लोगों को संभाल किधर है भाई चलो वैसे मैं सही में यार ये करने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं क्योंकि डोमिनेशन अगर अनलॉक नहीं हुए ना तो हम लोग वहाँ एंट्री नहीं कर पाएंगे
आग वाले अब तो जरूरत का नहीं है। क्या करेगा इस बहुत सारी लैंग्वेजेस ट्राई कर चुका हूँ, इसलिए मैं हर टाइप का लैंग्वेजेस और हर स्टाइल में हिंदी बोल लेता हूँ। मम्मी काम संभाल लेगा। Don't get frostbite. Wind blade. Disappear. Burn. Nice. Man. Dodge this. जो वो पानी पे आता है ना, तो उसके लिए मुझे फायदा है, क्योंकि वो पानी पे आने के बाद वो फ्रीज हो जाएगा। This moment will be frozen in time. Cool it. ये मिशन भी कंप्लीट हो गया। चलो तो फिर मैं टावर्स को जरा संभाल लेता हूँ। कहाँ है टावर? कहाँ है? इधर ही है क्या? और करीब है। चल मैंने ये देखो, ये सामने जो टावर्स है ना, जो मेरे एग्जैक्ट हेड की तरफ, वही वाला इस टावरों को मुझे वाले जो है ये come on कुछ तो होगा। इसे कैसे भी करके नीचे लाना चाहिए। Retribution. ब्लेड का जो क्लोज रेंज शॉट्स है ना, वो वाले पसंद होते हैं। और मिशन एक्टिवेट हो गया। अरे नहीं भाई, मुझे एक्टिवेशन नहीं कराना है। किधर गया वो छुपा हुआ? किधर गया? अरे भाई 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 मजा कर रहा था, किधर गया तू? चलो इसे जाने दो, ये ऊपर वाले को देखो। अभी तुम लोग सोचोगे कि इसके ऊपर कुछ आराम से पहुंच।
के बॉर्डर पे आ जाओ, फिर एक बार वहाँ खड़े हो जाओ, फिर यहाँ से ऊपर पहुंच जाओ। बस इतनी सी बात है। अच्छा मतलब ये बर्फीले 2 मिनट रुक जा साले, तेरे को पछाड़ के देखूंगा, रुक जा। मेरे को मारा आग में जलिए, फिर से आग में Wind blade. Freeze. किधर है? आर यू सीरियस? उतनी दूर? चलो कोई बात नहीं, अपना ट्रैवलर तो है, मतलब क्या बोलते हैं, shooting for police. Oh, I never expected you. क्या दे दिया इसने? ओह ये मुझे क्या बात है? मतलब एक तीर से 2 निशाने हो गए, क्या बात है यार, कमाल है। This wasn't expected from me. और क्या 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 बोलूँगा, चलो बस। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये लोग का ताकत उतना ज्यादा नहीं है तो इसको हील अप कर देते हैं। हीलिंग 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 के नाम 1000 का 10,000 बचा हुआ था। अभी तो मुझे थोड़ा ये होना पड़ेगा। ये देखो गोल्ड कलर में क्या ही शाइनिंग है। अरे यार ये देख कर ना मैं पूरा फिदा हो जाता हूँ यार, कमाल है यार, क्या ही अलग ही लेवल पे ग्राफिक्स है यार। वैसे मैंने कितना लगा होगा इसमें, वो देखो चोटी पे लड़का खड़ा है बोल के, वो शैडोज में क्या ही दिखती है। ठीक है सेटिंग्स में जाते हैं, तो आप लोगों को ये दिख जाएगा, क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स ये देखो हाई पर सेट किया है और एफपीएस जो है वो 30 पे रखा हुआ है, ठीक है, तो 30 एफपीएस में ही ऐसा खेल रहा है। और प्लस में हाईएस्ट जो है वो डिफॉल्ट पे, मैं कुछ नहीं कर सकता। M1 प्रोसेसर का कमाल है भाई। ये बर्फीला वाला भैया तुम ही आए। With the wind. मजा 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 मजा। ये लोग कहाँ है? वो कहाँ है, मतलब वो क्या बोलते हैं, come on मैन, कुछ तो रिवॉर्ड्स दो ना, मुझे अपने कैरेक्टर को अपडेट करना है। ओह जल्दी का टू पार्ट 2। क्या ये होल्ड ऑन अ सेक, ये कब आया? डेली रिवॉर्ड्स ट्रैवलिंग टू द डेस्क था थ्रो डेस्क, यहाँ पर नहीं जाना है, ये डेली मिशंस के लिए यही पर जाना है, तो मेन वाले पे उसके पास। Ad Astra. Thank you for completing today's command. वो रहा यहाँ पर, चलो टेलीपोर्ट हो जाते हैं
जल्दी से जल्दी। और हाँ, मैं कंडीशनली बता रहा हूँ कि मैं ये सिर्फ कुछ ही देर के लिए खेलूंगा, क्योंकि उसके बाद काम है। Hi, Catherine. It's us. Any new commissions? As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. कितना Uncle Dai is one of the foremen at Huishan Hall over in Liyue Harbor. He's hoping the Adventurers Guild can spare some manpower. मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि पाइमॉन और ये जो एडवेंचर वाली कैथरीन जो है, ये लोग जो बातें कर रहे हैं, ये बहुत दिन हो गए हैं सुने हुए। क्योंकि इतने दिन से वो रेगिस्तान वाले कैरेक्टर्स के साथ बात कर रहा था ना, तो उन लोगों के लिए आवाज ही नहीं है, बिल्कुल भी आवाज नहीं है। वो लोग सिर्फ ऐसा, और तुम लोगों ने भी देखा वो 5 घंटे वाली स्ट्रीमिंग में, उसमें सिर्फ खाली आवाज नहीं, सिर्फ खाली मुंह हिल रहा है, मुंह भी नहीं हिल रहा है, सिर्फ खाली इशारे चल रहे हाथों से, और वहाँ नीचे मोटर सक्सेस टाइप हो रहे हैं, वर्ड्स वगैरह। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसका क्या लग रहा था। लोगों की बातें सुनकर ना इजीली दिल को हल्का, इतनी ज्यादा प्यार हो जाता है कोई आवाज सुन। What is it we have to do exactly? I believe you'll be looking for workers. Ooh, looking for people? Awesome! We're good at that! I have no reason to doubt your abilities. हाँ, कभी डाउट मत करना। I'm sure the details can be worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle Dai. अंकल डाई और नहीं सॉरी, अब आएगी असली में। सॉरी सॉरी मैडम जी, सॉरी सॉरी अंकल जी, किधर हो, हमको दिखता है सॉरी, वो थोड़ा गला खराब हो गया। अंकल डाई, it's been a long Are time. you Uncle Dai? I am indeed. Ah, now then. You must be the adventurers assigned by the guild. Huh? How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Right again! You're pretty perceptive! In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Dai can see what you're made of from a long way off. Alright, my assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Woo woo! That's why we're here! Now there's someone else taking a cut? Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle life here. So there is someone else! Do you think we're not up to the job? It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. Last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. Besides, this guy's the best in his field. No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance. I'd go as far to say that there's not a soul on Tevat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert of his caliber. You're a fool if you think you found Tevat's #1 rock expert. Oh? And why might that be? Because Tevat's #1 rock expert happens to be a friend of ours. ये किसकी बात कर रही है? Ha ha! Didn't expect that, did you? Wait here, we'll go fetch him. Paimon bet Zhongli is listening to the storyteller. Let's head over. चौंगली के पास? नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे। इस बार हम लोग चढ़ के जाएंगे, क्योंकि यार बहुत हो गई यार, ये घूमना उठना
यार मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, चढ़ेंगे, आखिर में जाके गिर गए। टेलीपोर्टेशन में बहुत इजी हो जाता है, मगर जानने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अब यहाँ जॉन्गी को कैसे ढूंढूं? ये रहा। अभी नीचे गिर गया क्या रे? In our last tale, Rex Lapis. Zhongli, there you are! Oh. Here for a few tales. I didn't know you two were connoisseurs. ओ भाई, आज भी इसकी आवाज सुन के मत दिल भाई, कसम से यार। ऐसी भारी आवाज और स्टाइल और एटीट्यूड भाई जॉन्गी भैया के पास ही हो सकता है। Oh, no, we're here for you. Do you have time? Ah, something I'm rarely short of. We need someone who understands geology and ore. Someone who understands geology and ore. Take a look around. Is there anyone into that lore qualified? The requester claims to have enlisted Teyvat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better than you. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Oh, no. It's just Uncle Dai doesn't know what he's talking about. Paimon just wants to enlighten him. I see. Well, then it will be my pleasure to accompany you. Really? But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, I look forward to broadening my own understandings. Stop being so modest, Zhongli. Well, we got him. Let's head back to Uncle Dai. अरे यार, जॉन्गी भैया भी आ गया अपने साथ। अब उड़ के जाएंगे। Uncle Dai, we're back. Oh, and this must be the friend you spoke of? Yep. Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy. Let's not get ahead of ourselves. Still, I do have a claim to some experience in this field. So you say. Wait till my guy gets here. Then we'll see. It's no use me singing his praises. You'll have to see for yourselves. Is this the place? Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kun Jun. Young Kun, these are 2 adventurers assigned to us. And as for this gentleman... Huh? Longsheng Funeral Parlor's consultant. Mr. Zhongli. I've heard about you. They say you're a man of great knowledge and many talents. I had no idea I'd be meeting you in person today. I'm sure I recognize you. Have we met at the parlor? Wait, I've never been to the parlor. Uncle Dai, aren't you gonna test them? होल्ड ऑन सर, क्योंकि मैं जो हूँ अभी प्रॉब्लम आ गया है, वाईफाई जो है मेरा वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो साला 180 पे क्यों चल रहा है? मतलब 140 पे चलना चाहिए। स्ट्रीमिंग का यूट्यूब में चेक करवाता ना तो Huh? I wouldn't know where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhongli wins, he's the assistant. If Zhongli loses, never mind. Zhongli
contest? Why, it would be my pleasure. I admire your enthusiasm, good sir. I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk. I'm just saying it like I see it, which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. होल्ड ऑन अ सेकंड, यानी कि मतलब कि जोंगली और ये बंदे कुंजू के साथ बैटल होगा। ओह माय गॉड, रियली। होल्ड ऑन अ सेकंड, एक बात बताऊंगा, जो अगर आप लोगों को मेरे आई बाबा की आवाज, मतलब मेरे मॉम डैड की आवाज आ रही है तो जस्ट इग्नोर इट, और बाहर की आवाज आ रही है तो भी इग्नोर कर देना, ठीक है। और हाँ, मतलब कि जोंगली और कुंजू के बीच में बैटल होगा। मुझे तो 100% भरोसा है कि जोंगली ही जीतेगा भाई। वो तो गॉड ऑफ जियो है, यानी कि मतलब पत्थरों का, जियोलॉजी का बाप है वो। और ये बंदा तो बच्चा है उसके साथ। आई ट्रस्ट यू जोंगली भाई। So you're an appraiser, Mr. Kunjun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. Huh? How could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with them. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help me. So, do you have a poor memory? Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhongli, what do you make of this rock? A glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not mistaken, this is a rough gem from another nation. Ah, a keen eye. It's no ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. My intuition tells me that there's high-quality crystal ore inside. Whoa! Remarkable! This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some leftover industrial remnant. They had no inkling of the treasure that lay within. Woo! भाई भाई, मतलब कि जोंगली ने तो पहले एंट्री पे ही बुलसाई मार दिया भाई। कमाल है भाई, मैंने बोला था जोंगली पे पूरा भरोसा है मुझे। Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it through. Now that's a rare treasure. Such a detailed Whoa. description. Almost like he saw it with his own 2 eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? After all, we haven't even seen what's inside yet. Everything he said is true. हाँ? जोंगली भी Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. A rare find indeed. Well, if Zhongli says so, it must be true. हाँ, मैं भी यही बोलता I've हूँ। yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly what lay within? I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. I hope you didn't mind me flaunting my experience, Mr. Kunjun. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept my friendship. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is unrivaled in the trade. You won't come across another of his caliber in your lifetime. Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm.
There are men counting on you to find them. ओह तो मतलब कि मुझे उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे समझ गया कि नहीं, ये तो नया मिशन स्टार्ट किया मैंने अभी। तो मतलब कि अब 2 घंटे तक मुझे हिलना नहीं पड़ेगा। ये भगवान इतना मुश्किल क्यों? चलो ये इधर आता है। होल्ड ऑन अ सेकंड। चलो तब तक ये कर लेते हैं। नहीं, इससे बिजली वाले को कर लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसे अपग्रेड करना चाहता हूँ। और इसको भी दोनों में से किसी को तो यूज करूंगा मैं, कुछ सारा को, या फिर इसका नाम क्या है पता नहीं। प्रोनाउंसिएशन स्पेनिश की जैसा लग रहा है मुझे, मगर कैंडेसी कैंडेसी क्या नाम रखते हैं यार, पता ही नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं। मगर हाँ, उसकी जो पावर्स है, वो एबिलिटीज बहुत अच्छी। ठीक है, मैं ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ। और एक मिनट को मुझे करना क्या था? अरे उड़ते हुए जा सकता था। यहाँ पर उड़ने वाला पत्थर नहीं है। यहाँ एक व्यू भी है। अरे वाइट शोर ना मुझे बहुत ही पसंद है। आयरन के अलावा क्या सीनरी है यार, सही में। और इसमें जो ये ब्लू वाला आता है ना, ये बीच में, मतलब ये जो हमारा टावर है, क्या बोलते हैं उसको, स्टैचू ऑफ सेवन, वो एकदम गॉड लेवल दिखता है। चलो इसका भी थोड़ा काम है मुझे, ये भी कलेक्ट कर लेते हैं। हर बार कलेक्ट कर रहा हूँ आधी रात को, इसलिए मुझे इतना अंधेरा नजर आ रहा है। अरे कन्ना मामा का पत्थर, व्हाट? क्या तुम लोगों ने देखा भाई? 2 सेकंड के लिए वो, ये देखा तुम लोगों ने? अरे सीरियस, वो 2 सेकंड के लिए नीचे था, क्यों इस तरफ चला गया था? और अभी ये उल्टा घूम रहा है, क्या चल रहा है भाई ये? भाई अंकल डे। Whoa, this mine is huge! This is where the incident occurred. 6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, the 4 men we'd left behind had vanished. I led a team around the entire mine, but found no trace. That's when I decided to enlist help. So 4 miners have disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? Underground, overground, we left no stone unturned. We tried everything short of digging further into the earth itself. How could 4 sturdy young men just vanish into the bedrock? We'll need to explore the site ourselves before extracting any conclusions. Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. If you come across any clues, let me know straight away. So strange. How could the 4 of them just suddenly disappear? Did they run away from something? Let's look around first and... Over here! What's this? A pile of shirts, some trousers... Huh. A few everyday items. They must belong to Uncle Dai and his men. 1, 2, 3,
shirts, 10 pairs of trousers. These must be spares, right? Look, Uncle Dai's clothes are identical. The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Oh, and some tool belts. Items for washing one's face before the dawn shift. Mining equipment. So, they didn't take any supplies. Correct. Maybe they didn't move them. Maybe they... Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. They had time to take their tools, but not their everyday items? Curious. Huh. Why would someone set off with their tools, but leave their luggage behind? 1, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. Oh. It's certainly a possibility. We'll need more clues before any further inference can be made. If they didn't leave, maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Dai know. मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसलिए रुका है क्योंकि मुझे चाहिए अभी जोंगली कैरेक्टर को यूज करना है भाई बहुत ज्यादा गॉड लेवल कैरेक्टर है भाई मुझे यूज करना है इस बार अगर अटैकिंग मिला ना तो जोंगली भैया तुम प्लीज मेरे को मिल जाओ यार तुम्हारा कैरेक्टर यूज करना चाहता है इसे होल्ड ऑन अ सेक मैंने पिछली बार जो वो क्या बोट वाला बोला था कि जोंगली का कैरेक्टर एक बार यूज करना है बोले तो उसने दिया था मुझे तो इस बार भी मिलेगा शायद बड़ा इधर जाना है कौन से भाई मुझे यही तो चाहिए था Kunjun, what do you have there? Oh, right on time. Did you find anything? There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues within. Or, what does it have to do with the disappearance? Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. Okay. ये क्या हुआ वो विजुअल दिखा रहे हैं उसे वो 4 लोग वहां जा रहे थे Looks like he's concentrating really hard. What's he up to? I see 4 men following someone out of the mine. It looks like a child. A child? What's a child doing in a mine? I'm not sure. Also, how did you see anything exactly? Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remains a secret. It's a little odd. I've never dared to tell anyone before. I can perceive the memories of ore. Huh? Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can put your hand on a rock and boom, it just happens? I've always sensed that ore contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding area. All I have to do is touch one and focus my attention, and the memories come to me. मतलब कि ओरा वस्तु था वो चीज जो है यादों को करके वो चालू दिख जाते हैं वो Amazing! So you can find out everything that ever happened there. It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy.
Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Stone seeing. Fascinating. A rare ability indeed. It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. Kunjun. I'm glad I can be of assistance. Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. North. Another clue for Uncle Dai. Let's make a note of it. You go down to the... Oh, इसके बाद ये लेना है। मिशन करने के लिए या फिर अपग्रेड करने अरे बाबा Excuse me, sir. Are you one of the workers here? Ah, yes, yes. You must be here about the disappearance. Please, find them if you can. इसको कैसे पता I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. I stayed behind with the other four. After a while, I decided to take a break, just to catch my breath. I ended up falling asleep in the shelter inside. When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been speaking with them and suddenly they'd vanished. Maybe I'm next. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter. Perhaps an accident occurred on site. What a scary thought. An on-site accident. We should note that down too. ये मतलब कि इसके अलावा सब जगह पे गए Time to report back to Uncle Dai. You're back. How are the investigations going? We found 3 clues in the vicinity. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. Forced to? But who would Oh, kidnap miners? यार सॉरी मैंने बाय मिस्टेकली टच कर दिया यार स्क्रीन को Oh, indeed. Second, there were 5 workers at the mine. One of them left the site to take respite. When he awoke, his colleagues had disappeared without a trace. Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. It would appear that the incident occurred on site. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. Could someone have entered the site and simply walked away with them? This leads me to my third point. Mr. Kunjun here made good use of his, expert techniques to arrive at a conclusion. It was a child that took your men away. A child? But there are no settlements here for miles around. There's no way a child would have made it over to the mine. Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Your men were following a child. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the ruins. North. Right. I'll rally my men and head in pursuit. You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. If we set off now and make haste, we might be able to catch them. Not so fast. The incident occurred 6 days ago. Even if they set out on foot, they will have covered a lot of ground by now. You're right. New plan. I'll lead my search party over to the settlements further out and make some inquiries. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go investigate and see if we can come up with anything. In the meantime, you could keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. Agreed. All right. Me and my men will get going.
तो यानी कि मतलब चाचा तो पूरा का पूरा टोली लेके So, they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. वाइट Correct. वाला पड़ेगा। But there aren't any more clues at the mine. Shouldn't we go north? Wait. I believe we're missing someone. Huh? Oh yeah! Where's Kujun? Paimon and Betsy's still investigating. Let's go find him. सही बोला, यानी कि मतलब सूर्य अभी जो है वो अपने मैदान में ठीक चुका है ताकि सूर्य को फाइंड कर सके। मुझे लगता है कि भाई साहब जरा वेट कर लो भाई, हमें कुछ ना कुछ ये कलेक्ट करना होता है। बहुत लगे पैदा हुआ है ना, अपग्रेडेशन तो पूरा का पूरा तबाही मचा रहा है। चलो भैया कुंजी, Kunjun, what are you searching for? We're all out of clues. Let's get going. Ah, apologies. I'm conducting a quick search for my own benefit. I'm looking for a precious stone known as Dragonfall. Dragonfall. Dragonfall is often used in forging. What use do you have for it? I don't know. I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. I've been feeling very absent lately. Name and address aside, I'm having trouble remembering things. In fact, I've been feeling extremely anxious, as if there's something I've forgotten to finish. It's an unpleasant sensation. Oh, Paimon knows that feeling. When you know you've forgotten something, but you can't remember exactly what it is. I don't even know where to start with it. I've been aimlessly wandering. That day at the market, I overheard a conversation while I was buying something. They mentioned Dragonfall. It sounded so familiar to me, as if whatever it was I had to do was linked to that stone. So, I decided to look for some. Perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to do. I see. If I am able to during our endeavor, I will help you look for this stone. Really? Oh, thank you, Mr. Zhengli. You're too kind. Think nothing of it. Shouldn't we get going? Heading north from the chasm, we'll reach Lingju Pass. If this is indeed the path they chose, there will be traces. Great, let's have a look. तो इसलिए सारे मिशंस जो है वो यहीं पर आके अटक जाते थे। जो भी करना था यहीं से उड़ते हुए, ये वाला स्टैचू ऑफ 7 से उड़ते हुए आना पड़ता था, या फिर ये टेलीपोर्ट वे पॉइंट की तरफ से। लेकिन सारे क्वेस्ट जो है वही से ऊपर है। लग गया। अभी जो है मैं कोई भी मिशन करते समय अटैक नहीं करना क्या बताऊं। पहले मेरे पास खाने के लिए क्या है, कुछ तो मतलब हीलिंग के लिए ना मुझे ये सब चीजें करना था। 11 बता ले बेटा, ऐसे इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल आ जाता है। रेडिश वाले में बार आता है यार। खाने को देखकर ना मेरी असली जिंदगी में भूख बढ़ने लगी यार। इसमें बार बोनस खुद को देते करो ना यार। लीसा का कौन सा चलो मैं मैनुअली बोनस जो बोला जब भी बोनस मिलते ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बोनस के साथ
चलो कोई बात नहीं, Guess we can rest a bit. कितना खाना हुआ देखते हैं जरा प्लेट पे। इतना कि एक मैच में कुछ देर तक तो संभाल सकते हैं। और हो रहा है सर, मुझे जरा कुछ शॉपिंग करना है। यहाँ पर ये देखो ना, विजुअल्स क्या दिखा रहे Wait, हैं। there are tracks here. These must have been left by the miners. Let us make our way to the end of Lingju Pass. If there are no footprints there, it would suggest that the miners are still within the pass itself. However, if we find new tracks, we can follow them wherever they may lead. ओ यहाँ हुशियार से देखो वहाँ, ठीक है। Hey, footprints! It would appear that they made their way through Lingju Pass and kept moving. Oh, sorry, my mistake, क्योंकि मैंने footsteps कहा है, footprints कहा है actually, sorry. If we follow their footprints, we should be able to find where they went. That's right. चलो। मैं आगे बटन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। नहीं जाने दो। मेरे footsteps से आगे footprints। हेलो भैया, क्या कर रहे हो? Oh no, the footprints end here. We should inquire with anyone nearby. If the miners came through here, they may well have seen them. Hi there, have you seen anyone dressed like a miner around here? A miner? I'm afraid not. Let's try someone else. ठीक है। Hello, have you seen any miners nearby? About this tall? 4 of them? Stop bothering me. Can't you see I'm cloud watching? Jeez, a little grumpy, aren't we? Whatever, let's go ask someone else. ये बंदा थोड़ा रूड था ना। हाय, मिशन छोड़ दे, यहाँ पर भी किया। बस सालों सुकून से मिशन करने दो मेरे को। Seen any miners? It must have been about 4 or 5 days ago. There were a few men who came through here carrying baskets and picks. I guess that could have been them. Yeah, that's them! 4 or 5 days ago. It appears that they were moving slower than we'd anticipated. Traversing the geography of Lingju Pass must have held them up. It was so strange. 4 big guys with lifeless expressions. It was like they were in some sort of trance. And there was a child staggering in front of them. Huh. This child. Did you see what they look like? I caught a glimpse. Blue hair, short. I think it was a girl. She wasn't smiling. In fact, she looked very serious. छोटी सी लड़की जिसके
यू बाल है। ऐसा कौन है रे बबुआ? जो मेरे सारे मिशंस में तो कोई नहीं दिखा, मतलब वो लड़कियां जो थी सारी की सारी ब्लू हेयर्स तो नहीं थी। And they took this road? Yes, they followed it straight from here. Let's go after them. ये तो सीधा टेलीपोर्टर के मुंह के सामने आ रहा भाई। क्या किस्मत है। मिशन इसको बोलते हैं। अटैक नहीं होना बेटा। More footprints. There's a person over there. Help! Please save me! Is that what it is the people are looking for? Oh, let's see first. Ask questions later. Oh shit, oh shit. You're cute. That really hurt. Whoa, 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 whoa. हमारे कॉपी भरे। What's her? Oh, so sorry. नहीं तो मार के दो। बोल रहा You hate that. Cool it. Don't push your luck. सही में यार, ये तो काया पे ही तड़प जाती है। यार सही में काया नहीं, क्या बोलते हैं, ड्यूलक भैया की तो पूरी तरीके से देख लो, कितना बचा है 21,000 में से। दिमाग खराब हो गया यार। यार पहले ही एक ही मेरे पास 5 स्टार वाला कैरेक्टर है और उसको भी पूरा खाना बचा रहे। भाई नाग वाले चीजों को देखना पड़ेगा और उनके सामने बड़े मोटे। This moment will be frozen in time. Watch this. Get here! Those monsters were so aggressive. They must have noticed me walking through. Before I knew it, they were all over me. Thank you all for saving me. My name is Wanyu. I belong to Liyue's Shengyu Hall.
I head up our human culture and civilization research. Huh? You sure you're not a miner? A miner? Yeah, we're looking for a group of 4 strong fellows carrying mining equipment. I think I saw those people. Really? Yes. I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju Pass. About halfway there, I came across some people. A few men and a child. I was in a hurry. I didn't get a good look. I'm afraid I'm not even sure what they looked like. Apologies. I think that's all we needed to hear. Thank you. I hope it's useful to you. I'd better get going. There's a conference I need to attend. Again, thank you all for your help. इसमें जियो ने अभी तक एंटर नहीं किया, मतलब जोंगली ने. According to this scholar, the miners were heading for Nantianmen. Can we be absolutely sure that it was the men that we're looking for? A child with a group of adults. Sounds pretty close to Paimon. But... Hey, perhaps that rock over there can tell us more. Aha! Paimon nearly forgot about our secret... It looks promising. I'll do my best. चल बड़ा जा. दिखा दो कि क्या बोलते हैं, गिली रीछू वाला जा. Those are the men. It's the same group, all right. They followed this road. Mr. Kunjun, your stone seeing is something I won't forget in a hurry. I suppose it is an asset, though I rarely find a use for it. But praise from Mr. Zhongli is high praise indeed. It's a good thing we brought our Kunjun compass along. We would have lost all sense of direction a long time ago. You think so? I guess it's been a worthwhile trip then. It feels like we're cracking a criminal case. It's a lot of fun. Be that as it may, we would do well to keep our guards high. 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly day and night, over hills and mountains, led by a child. This is no ordinary incident. तो आप पीछे देख रहे हो, जोंगली के पीछे जो वो मॉन्स्टर है उसको हराने के लिए जोंगली को ही बुलाना पड़ेगा. मुझसे ना हो पाएगा भाई, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है यार. पिछली बार ट्राई किया था तो मेरी खुद की बैंड बच गई थी. Oh, you're quite right, Mr. Zhongli. We should have our wits about us. बस अगर दुआओं में, मतलब विशेष में जब करेंगे ना, तो कुछ दिनों के बाद जो विशेष होने वाली है, तब अगर वो मेरी किस्मत अगर खुल गई और जोंगली निकल गया, तो वो सोच लो कि मुझसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर आईडी इस दुनिया में नहीं होगा. वैसा वाला फीलिंग आ जाएगा भाई मुझे. तो मैं तो पूरा गॉड लेवल बन जाऊंगा. जोंगली को ही अपग्रेड करूंगा, किसी को नहीं. ऐसा छोड़ दूंगा सब. मारने जैसे जोंगली इंपॉर्टेंट है भाई, बोल के मेरा फेवरेट कैरेक्टर है जोंगली. जब से इसका पत्थर वाला अटैक और बाकी सब चीजें देखा है, इतना हो गया हूँ भाई इस बंदे को. That's not all. Our scholar was attacked by Geovishap hatchlings, but the level of aggression they exhibited was unusual. We have encountered many clues along the way. So far, they've pointed us in the right direction. और हाँ, ये पूरा मिशन के बाद ना मैं खाना खाने जा रहा हूँ. बहुत भूख लगी है असल में, इसलिए तो इसको जल्दी जल्दी खत्म करूँगा. The miners headed in the direction of Nantianmen the day before yesterday. From here, they would have had to navigate a perilous mountain road. If their destination is indeed Nantianmen, we should be able to catch up with them. Great! No time to lose! I left a mark in the vicinity just now. If Uncle Dai does pass through here, it should guide him to us. Clever thinking! A classic Zhongli move! सही बोला. मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? ये फिर टेलीपोर्ट. ओ चीज़ें मेहनत नहीं करना पड़ेगा मुझे. जोंगली पीछे भैया भैया.
There's a basket lying here too. This must be one of the miners. Hey! Hello? Can you hear us? Judging by his appearance, he must have collapsed from exhaustion. Should we wake him up? I can still dig. Sounds like he's whispering something. It seems that he thinks he still has work to do. Something's not right. There's a camp nearby. We should take him there and monitor his condition before deciding our next move. अब क्या हम बच्चे को भी तेरा नाम रखेंगे? जंगली भैया बताओ क्या हाल है? How is he? He won't die, right? He's worked himself into a stupor. Thankfully, he's not in serious danger. Paimon heard him talking about digging for something. Did he dig himself into this state? It's certainly a possibility. It looks like there's something in his pocket. Are these ore fragments? I just witnessed the memories within these ore fragments. This person brought these fragments out of the mine. He's one of the 4 that we're searching for. How he came to be here is what we need to understand. So he was kidnapped and then abandoned here. But if they didn't need him, why bring him all the way out here? Unless something happened. Something that led him to fall behind. Ugh. Paimon's had enough. This is too mysterious. Oh, wait a moment. Seeing these fragments has jogged my memory. I have something for you. एक सेकंड के लिए यहाँ रुक जाओ क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है पूरा का पूरा रीडर्स की तरह मतलब कि पहेलियों की तरह है। ये चीजें तो मैं करता हूँ। हमेशा मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि पहेलियों में क्यों बात करता है बे बोल के। तो इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि कहानी जो है मतलब कि ये एक लौता बंदा जो है वो छूट गया है क्योंकि कुछ कारण की वजह से लाइक मे बी अनकॉन्शियस सर चकराने की वजह से हो सकता है। मगर हाँ इतना गारंटी बोल सकता हूँ कि सर चकराने की वजह से नहीं उस ओरा की वजह से हो रहा हो। मगर इसको तो कुंजू को फर्क नहीं पड़ता मतलब कि वो ओरा की वजह से नहीं है कुछ और ही है। What is it? Oh, is it a present? Something for us? As I mentioned, before I met Uncle Dai, I was in a daze. After setting out with you on this case, it feels like a fog is lifting. I was so happy when Uncle Dai enlisted you to help. I would never have managed to track down these clues by myself. These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily rare. One for each of you. A memory, if you will. It's beautiful. Oh, and the colors change as you turn it. It's like a different crystal from each angle. मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे 45 होने के बाद जो है वो मेरा पैमान जो है वो चला जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख होगा क्योंकि वो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है और फ्रेंडली भी है तो उस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है पैमान का वो क्यूटनेस और वो गुस्सा और वो खाने के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी तो मेरे चला जाएगा यार जल्दी से अपग्रेड करना नहीं चाहता मैं एडवेंचर रैंक। But of course, take it. And this one is for Mr. Shangli. Huh? Is something wrong? Not to your liking? On the contrary. I just hadn't anticipated receiving a gift during the current circumstances. But thank you. I will take good care of it. I'm pleased you like them. It's nice to be able to give a gift that others can appreciate. यार ये मतलब कि जॉन्गली को किसी ने प्रेजेंट तक नहीं दिया गिफ्ट वगैरह। ओ बाप रे बाप साला इसलिए वो हर दिन वो डीलिंग्स करता रहता है। यार मोहब्बत की बातें तो वो भूल ही गया है। कमाल है यार। Oh, I see more rocks over there.
You should all get some rest. I'm going to scan the surroundings. Perhaps You sure like rocks, huh, Kunjun? Sorry. ores are the crystals of the earth, the sediment of time itself. I feel at peace among them. Get some rest and call me when you're ready to set off. I won't be far. हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार वो गलती से मुझे लग जाते हैं यार, क्योंकि मैं कहानी में इतना भूल जाता हूँ ना कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस ये कहानी तो बहुत अच्छी है। Rest easy. I surveyed the area. There's no danger here. Oh, however, there is something I wanted to discuss with you. Huh? What's with the seriousness all of a sudden? Traveler, does Dragonfall mean anything to you? You mean the ore that Kunjun's looking for? What's so special about it? Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Dragonfall, on the other hand, is formed as a product of elemental reactions. कहीं वो ड्रैगन फॉल और कोई नहीं, कहीं वो हमारा ट्रैवलर कैरेक्टर तो नहीं है? मुझे डाउट आ रहा है यार, क्योंकि ये ऊपर से गिरा ऐसा बोल रहा था स्टार्टिंग कहानी में, जब पहली बार जब गेम स्टार्ट होता है तब ये कहता है कि तो उसके साथ लड़ाई हुआ, फिर उसके बाद मैं अपनी बहन को खो गया, फिर मैं इस आइलैंड इस वर्ल्ड पे आके गिर गया, बोल के इस तरह गिर गया। तो ड्रैगन फॉल दोनों एक ही हो सकता है शायद। भाई वो ड्रैगन ये बंदा तो नहीं है, मतलब कि दूसरों को ड्रैगन दिख रहा हो और असल में ये गिर रहा हो, क्योंकि इसका पावर जो है वो लाइक क्या बोल सकते हो, वो स्प्लिट हो गए या फिर वो टूट गए या फिर ऐसा कुछ। क्या क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, मगर कैलकुलेशन लगा रहा हूँ क्योंकि शायद ये ड्रैगन फॉल ना हो उस वजह से। ठीक है, ये बस एक थियरी है, ठीक है, या फिर कहा जाए तो हमारे लोकल भाषा में तुक्का बोल सकते हैं। Elemental reactions can produce material objects? Indeed they can. However, only a minority can survive for long periods of time. मैंने कहा था यहाँ पर कि वो बंदा ऐसा टूट गया हो, मतलब उसका पावर्स वगैरह ऐसा टूट गया हो जिसकी वजह से वो बहुत सारे, जैसे कि पाइमोन ने अभी बोला कि वो स्प्लिट हो जाते हैं मटीरियलिस्टिक टाइप के, तो जिस वजह से शायद ये गॉड्स ऑफ होल्ड ऑन अ सेक ड्रैगनफॉल का ये तो नहीं है कि ये वर्ल्ड को बनाया और किसी ने नहीं, तो बस वो लड़की ने बस उन लोग को गायब किया हो, और वो वर्ल्ड तब बना जब वो लोग उस एक अंधेरी से यूनिवर्स में एंटर हुए हैं, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड क्रिएशन और कोई नहीं इसको बनाया हो ड्रैगन फॉल ने, मतलब अपना हीरो ने, शायद ये भी हो सकता है। इसलिए वो हर बार वो टी पॉट के थ्रू यहाँ पर आने के, मतलब इस वर्ल्ड पे आने के बाद वेलकम टू योर वर्ल्ड वगैरह और एंटरिंग यूर वर्ल्ड बोल के यूर वर्ल्ड बोल के बोला है, शायद हो भी सकता है। ये बस इससे सकता है। Dragonfall first emerged in the midst of a great battle, thousands of years ago. Powerful clashes of elemental energy gave birth to elemental crystals. When the fighting ceased, these geological remnants were miraculously preserved. यहाँ पर जॉनली ने बताया कि वो 1000 years ago किया है, यानी कि मतलब कि कहीं ये बंदा वही बोल रहा था ना कि बहुत सालों की वजह से इसी आइलैंड पे मैं फंस गया वगैरह। इसको भी पता नहीं है, इसकी याददाश्त भूल गया क्योंकि वो गायब कर देती है ना वो मेन विलन वगैरह। तो ये सब की चीजों की वजह से शायद ये गेम में भाई कमाल का ट्विस्ट आने वाला है। And yet they are crystal creations all the same. Few and far between, relatively unknown. A few hundred years ago, they were virtually mined into obscurity. मैं ये तुक्का इसलिए बोल रहा हूँ, और इसका पावर से गिर गए होंगे गॉड ऑफ जियो वगैरह ये सब चीजें क्रिएट किया होगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो अपना ओरिजिनल ट्रैवलर कैरेक्टर जो है ना, वो हर किसी का पावर्स को यूज कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी पावर जो है इसका ही है, जो इस दुनिया पे स्प्लिट आउट हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक एक मिशन करते 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 सारे पावर्स को वो ले रहा हो, और जिसकी वजह से ही वहां पर दूसरी वर्ल्ड में जो इसका बहन है, वहां पर वो पूरा का पूरा बॉस बन के बैठी हुई है।
आप समझ रहे हो सारे कैलकुलेशंस कैसे मिलजुल रहे हैं, क्योंकि ये थियरी है भाई, ऐसा हो भी सकता है बोलते हैं, ठीक है, सही में नहीं है, मुझे पता नहीं है कहानी क्या है बोलते हैं, मगर मैं बस थियरी लगा रहा हूँ, ठीक है। Why is it then that a citizen of Lior now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been mined. Weird. Paimon doesn't get it. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Kunjun, whose motivations for seeking it are unclear even unto himself, it's practically unheard of. Ulterior motives? Is he a villain? A conclusion that is presently impossible to reach. We must watch and wait. Don't forget, rescuing those miners is the primary objective. As for anything else, sooner or later the tide will reveal the lie of the land. मुझे लगता है कि वो ड्रैगन फॉल का ये तो नहीं है, इसलिए वो लड़की मतलब पाइमन बोल रही थी कि वो विलन है बोल के, शायद हो भी सकता है। We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road through. Now that we've found one, the others won't be far away. When you're well rested, call Mr. Kunjun over to us. We still have more investigation ahead. We should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. I suggest we leave a note for Uncle Dai. If he does find the camp, he'll know what to do. एक और क्रिस्टल आता, ये क्रिस्टल काफी नहीं है कि ये भी क्रिस्टल आ गया। संजू भैया आप ज्यादा दूर काहे खड़े हो, हमारा को छोड़ के एक भाई बहुत ये पर काया जो है वो बहुत Kunjun, we need to get going. No problem. I'm done here. Any results, Mr. Kunjun? There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. Difficult to say. I feel that ore memories tend to be from the recent past. So there's never any ancient memories? Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that survive are rooted in powerful emotion or thought. That makes sense. It is the same for people. Indeed. Let's keep going. कहानी बदलने वाला है ये वाला पेड़। वाह, इस पर तो मैं आ गया था पहले ही, क्या मस्त दिख रहा है यार ये पेड़ तो। Hold on a second. Cool it! लग गई। Cool it! तो है दूसरे बाकी ओके, ऐसे टाइम पे अपने सारा कोई बुलाना सही है। होल्ड ऑन सर, कुछ सारा दो दो है क्या? जब काया खुद ही दो दो है तो कुछ सारा दो दो का है।
Is this an answer from this world? Okay, so यार क्या Such an immense tree. And there's so many mysterious looking crystals up there too. Amazing! This ancient tree. Let's conduct separate investigations. I'll take that area. Perhaps you could survey this section. All right then. Kunjun, can you see anything worth investigating? Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. Paimon's gonna look over there. Huh. It's worth a try, surely. Let me see. Oh! This is... Hey, what's wrong? just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry about. Not yet. Whatever. Paimon's going to investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? If you don't try, you won't know. Anyway, you'll be able to get a good look at our surroundings from up there. You think so? When has Paimon ever come up with a bad idea? Wait a minute. Paimon can fly. All right, Paimon will go. You wait here. Paimon will... All of you, come here. Huh? Xiangli's voice came from behind the tree. Did he find another clue? Quick, let's go see. Maybe he found another miner. वो भी सकता है नहीं पड़ती इसको यार इतना औसम दिखा रही है फूल रोशनी से भरा हुआ फूल और क्या और किससे तुम्हारी कहाँ जा रहा है भाई This has been newly dug. It would appear our answer is up ahead. Is that a voice coming from the tunnel? Someone else go first. Compose yourselves. I will lead us in. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves and tread lightly. मेरे हिसाब से कितना किसकी गड़बड़ है यहाँ टनल का है वाओ यही टनल का क्या Listen. The missing miners are here. What are they digging for? I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. Huh? That gate. Has it been there all along? Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere until they opened the gate. So behind the seal there's... We can't hurt them!
वाओ, ये क्या था? दिस वाजंट एक्सपेक्टेड मैन। मतलब अंदर चला जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। मम्मी, मम्मी, जियो भैया, तुम भी संभाल लो, मेरे को नहीं What जाना। type of monster is this? Morax, you arrive at my doorstep of your own volition. Excellent. Taking revenge for sealing me away will be all the easier. So, the little girl is your power incarnate. But if you recall, Ishtar, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. वाह, वाह, हमारा भास्कर, 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 भास्कर। Quake! मुझे पता ही मत हो रहा है। Dodge this! From rock to dust. Sooner or later. Ow! This wasn't a good. जमीन के नीचे में माफ कर दे भाई, मैं मजा कर रहा था। There is no atonement for 1,000 year pain. भाग डूलू भैया, भाग। Rise. तेरी माँ का इसको भाई, ये उछलता भी है साला, इतना मोटा होने के बाद भी। मिसाइल भी छोड़ दे, बस साले रुक जा कमीने। The enraged earth will not absolve you. साले रुक जाइए बाबड़े, गाड़ी नहीं है ना मेरे बाप। Shifting sands know not the mountain's permanence. Trust. प्लीज भाई जल्दी से। Crumble. Quake. Fissure. हजार डैमेज दिया। There is no atonement for 1,000 year pain. साला गोली मार रहा है। फिर उछलेगा। चल छोड़ो। ये लोग भैया। Freeze! Don't get frostbite. Dodge this. Crumble. पहला डोर का लगा। Shifting sands. भाग साया भाग। The mountain's permanence. The enraged earth will not absolve you. साला कॉकरोच की थी। भाई 2 सेकंड रुक जा। भाई
ये उछलने वाला है। Rise! मुझे लगता है कि डीलर के लिए कुछ खाना खिलाना पड़ेगा, वरना ये डीलर टपक जाएगा। क्या किस्मत है। Crumble! Fisher! इसको कैसे मारूं? Quake! Careless! मारना तो बहुत Rise! Ouch! Quake! Enraged Earth will not absolve you! Ouch! Are you serious? इसका पेट कैसे मर गया इतनी जल्दी? Gather! From rock to dust! Sooner or later! मुझे लगता ही था सब। Fisher! Stabilize! Solidify! Cowardly insect! हाँ लगा ही था मुझे। Order guide you! For 1,000-year battle! Is once not enough? You would forsake me again? If that is what you choose to believe, so be it. He who bears the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. मैं जॉम्बी को हल्के में नहीं लगा।
इंट्रोडक्शन के साथ पैकिंग भी अच्छी तरीके से There is no atonement for 1,000-year pain! Solidify! Anglia atau अपने नीचे Morax, you think you can destroy me? Stabilize! There is no atonement for 1,000-year pain! हाँ सही में यार Solidify! Come, experience an eon of suffering! क्या करने वाला है Stabilize! देखा जा The enraged earth will not absorb यार जान भी नहीं करते Shifting sands Solidify! Know not the mountain's permanence! I will have order. What? भाई जब किया है Morax, 1,000 years after you sealed me underground, you return for the second time. होल्ड ऑन अ सेक ये जोंगली को मोरेक्स क्यों बोल रहा है साला भाई ये क्या क्या मतलब क्या गॉडम जियो मोरेक्स जियो जो भाई ये मतलब You should call it by its name, Ashtaha. Fate. Fate? Fate? So here lies the wisdom of the gods. Destroy all deemed redundant. Enlist tyrants to ravage the wilderness. oh my god No. You have forgotten. That voice! Ashtaha. Huh? Kunjun? Morax. It's been a while. You're... Ashtaha. The very same. During the battle, you imbued us with your power. Yes. It was all I could manage.
Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only became clear to me upon reaching this tree. What? भाई ये भी एक सुपरमैन है। चलो मैं इसको हल्के में ले रहा था भाई। अब भाई माफ कर दे भाई, मैं बहुत मासूम, बहुत ही प्यारा लड़का हूँ। Allow me to elaborate. I am not Ajdaha the whole, but a fragment. Heaven and earth, yin and yang, opposing forces. You can consider the existence of me and the Ajdaha you see there to be a reflection of such polarities. We are a schism of the will of Ajdaha. मतलब कि सामने वाला जो बच्चा दिख रहा है वो है मोरेक्स। Are you serious? So there are two Ajdahas? No, it can't be. That's impossible. When the seal loosened, your power manifested in this world as a child. With this new identity, you were able to vent about the forces that suppressed you. But would anyone listen? Would they even care? That's when it occurred to you. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance to the seal itself. Your plan was to launch an attack on both ends, from outside and within, thereby fully destroying the seal. The audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. Find Morax, and aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. It's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity and ancient dragonkind. Morax, do you want to tell the tale? There would be no harm in it. The decision is yours. एक सेकंड ये बच्चा मोरेक्स है या साला जोंगली मोरेक्स है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। जोंगली भैया तो जोंगली है, गॉड ऑफ जियो है, तो ये मोरेक्स कैसे हुए? ये समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। You haven't changed. Then allow me. Ajdaha was once a friend and ally of the Geo-Archon Morax, with a lifespan far exceeding that of mankind. However, that which is derived of the Earth is no more or less than the Earth itself. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in powerful emotion. But as time passes, so these memories fade into obscurity. Erosion is the world's greatest destroyer of memories. Erosion ground Ajdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the face of his old friend, and his memories of defending Liyue Harbor disintegrated. Ajdaha, now incomplete, became irascible, aggressive. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. This much is true, which is why you attacked the chasm, why you waged war against Morax. In the beginning,
In order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to us. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. We lost all reason. Morax shared with us some of his power to prevent further erosion, but it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. And so, we became you. And from your will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise between Azhdaha and Morax. You can hate me, but you cannot deny me. No! No! I am the remnants of Azhdaha's benevolence, the echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to go further, a willingness to coexist peacefully with mankind. No, no! It is I, Azhdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans that decides. I will not swear allegiance to this insect. मतलब कि ये अजदहा जो है ये एक्चुअली में पहाड़ों से भी मतलब पुराना, मतलब कि मतलब गॉड ऑफ जियो से भी पुराना है। नहीं उतना नहीं हो सकता, उतना नहीं हो सकता। जब वो गिरा तभी तो ये दुनिया बनी, गॉड ऑफ जियो और बाकी सब जो स्टैचूज ऑफ सेवन है उनसे आने से पहले ही, मतलब वो लोग आने से पहले ही ये नहीं था। उनके आने के बाद ये शायद ये कीड़ा बन गया, क्या अजदहा, ये क्या कहता है। Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an insect in turn. You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart. If you are the memory of the earth, then I am the memory of coexistence. Of coexistence with humanity. All powers under heaven, rise and fall of land and sea. A star appears within the wild. A sun ascends as bright as jade. Strange. What is this feeling? And all this? You are spent, and I will soon disappear. Before I do, heed these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. Even where it is fleeting and leaves no trace. Even where it will never fall again. No! That isn't true! I don't accept this as fate! Perhaps it isn't, but it remains an inevitable misfortune. More axe! The little girl vanished! Are you satisfied, Azhdaha? I had to make amends. Satisfaction had no part in it. So, Morax, you call yourself Zhongli these days? What? I do. Well, I'm afraid old habits die hard. To me, you're Morax. As you please. I never did forget your gift of sight. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching for the sun. A pair of eyes,
From Morax to Ajda. This. I will remember this. Your power is nearly spent. Perceptive as always, my friend. Shall we get going, you and I? Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. Indeed. Hence the need to get going, to fix the damage left in your wake. Straight down to business as always. Let's go. Oh, हमारे लिए प्रेजेंट भी है। तो एक डोमिनेशन है ये। Huh? How did we get here? We need to go back and check on the miners. रिटर्न करूं बैग? Oh, Uncle Dehi. So there you are. My men and I found your clues and followed them straight here. We found Mao in a tent at the campsite unconscious. It seems he'll be okay. Sadly, we found no trace of the other three. Huh? Young Kun, what is... Nothing. Pay it no mind. Those three miners are over there, in that cave. Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't worry. Right. Well, thank you, all of you. I better go and see how they're doing. So you're taking them back to Liyue Harbor? That's right. Can I come with you? No problem. You rescued my men. I'll be happy to assist all of you in any way I can. I'll be back soon. I need to assess their condition. Kunjun, we should be calling you Ajda. You're coming back to Liyue Harbor too, right? Not I. Merely this body. Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kunjun hails from a family of famous artisans. He too will be famous in time. It would be a shame for someone of his talent to go missing. You always did have a great admiration for blacksmiths. Curious how swords and daggers are blind, yet their creators see so much. Perhaps empathy is mankind's proudest achievement after all. Ajdaha, I am no longer the Geo Archon. I can sense it. मतलब कि जियो आर्कन, गॉड ऑफ जियो, लॉर्ड ऑफ जियो और जोंगली, मोरेक्स सब कुछ ये है भाई। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? मतलब कि एक मिनट, मतलब कि जोंगली यानी कि मतलब कि द लॉर्ड ऑफ जियो, उसके हजारों नाम हैं जिनमें से ये जोंगली को रेगुलरली यूज कर रहा है एज अ ह्यूमन, ताकि वो ह्यूमैनिटी और बाकी सब चीजों को समझ सके और उनके साथ उनकी अच्छाई को बाहर ला सके और अच्छी चीजों को बाहर रख के बुराई को मिटा दे। ऐसा टाइप का हीरो टाइप का गॉड बन सकते हैं। वैसा ही है ये एक्चुअली। Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate. Let's get the difficult part out of the way. I cannot guarantee that I won't be awoken a second time. No matter. If that day comes to pass, Liyue must prepare itself to face you. And how will Liyue fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god. I ought to be here to witness their rise and fall. देखा भाई, ये खुद मान रहे कि ये खुद गॉड था, अगर अभी एक मानव की तरह मतलब इंसान की तरह। All life is shaped and then ground away by the endless flow of time. You were always the strongest among us, yet it would seem that even you have been eroded. अगर जोंगली मिले हैं तो समझो कि आप लोगों की किस्मत में ना बहुत ज्यादा ही पावरफुल वाला कैरेक्टर मिल चुका है जो गॉड है।
That's unimportant. Fate is ordained by heaven. Even if our mission had already concluded, it would be cowardly not to strike out on the road of departure. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet, even this is temporary. When you reach the end of time, those people, those past and future relationships predetermined by fate, they will be waiting for you. I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. I fear that the life of an elemental being is longer than any in this world. Were it not so, you would have killed me long ago, and would not be having to face me again now. You've brought a smile to my face. When all is said and done, a reunion between old friends is an auspicious occasion. यार सही में यार जॉन्गी तो एकदम तो भाई दिख रहा है यार अभी तो इस व्यू में. That day in the chasm. Did you hesitate? A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time a god of the people of Liyue. You chose justice, but did not forsake your kindness. You came to me not as an assassin, and so I was willingly sealed away. The movements of the Earth Dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, even at my full strength, I struggled to confront you, let alone seal you away. मतलब कि वो ड्रैगन है, अर्थ ड्रैगन. ओ भाई, मतलब कि वो जो मर गया नहीं, मरा नहीं है. वो वाला नहीं है, शायद दूसरा वाला ड्रैगन है. जो मतलब कि गॉड्स को भी मतलब कि वो उनको कुछ देर के लिए हिला के रख सकता है. ओ भाई. Hence my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder. The face may have changed, but the content of the contract remains intact. Old friend. God of contracts. I hereby honor our agreement. Thank you, Ishtaha. My life is nigh on eternal. I will go on with the infinite flow of time. And you, Morax, you too will live for many a day to come. You're leaving? If it is fated, Morax, we will meet again. वो हवा के साथ गायब हो गया. Yes. Don't be alarmed. He's only asleep. Whoa. That was so weird. It was like he suddenly became another person. In fact, we have yet to meet the real Kunjun. He was. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years ago remain crystal clear in my mind. In our last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo-life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Ishtaha was. I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him.
With his fingers, he made 2 eyes, quicker than words could tell. Lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. I agreed to let him live among the people above ground. But if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the 4 corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. खत्म? जोगी भैया है अभी भी है भाई. 1,000 years ago, Ajdaha attacked the chasm. I tried to obstruct him, fighting him tooth and nail down the length and breadth of the mine. Finally, I brought him down and sealed him underground. During that battle, Dragonfall was born. Ajdaha could sense the stone. Subconsciously, he wanted to use it to find me. मैं मानता हूँ कि मेरी तेरी कुछ अलग ही रेंज पे चल रहा था और मेरा दिमाग कुछ और ही चल रहा था. मैं जानता हूँ ये ड्रैगनफॉल और कोई नहीं, आजडाहा था जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, वही जो कुंजू के अंदर था. हाँ बात साला कितना बकरा, इग्नोर करो उसे. तो इसमें मतलब कि इसमें ट्रैवलर कैरेक्टर का कुछ भी संबंध नहीं है. तो ठीक है भाई, चालू करते हैं. Despite being the victor, I could not claim to be stronger than he. And in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me, towards Liyue, towards life above ground. He was willing to be sealed away, but as the erosion set in, he forgot. Even I cannot avoid it, but there is something I understand better than most. When the door opens, it is time to leave. The greater the power, the greater the danger erosion may bring about. The millennia may come and go, but even a stone may tire. Personally sealing away an old friend. This is just one form of erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps this is the erosion imposed on me by the heavenly principles. That I was a god of mankind. My identity may change, but my eyes will bear witness to the history of humanity. You still care a lot about Liyue. Call it part of my duty. I must thank you both. No worries. Oh? About what? Oh yeah, Paimon nearly forgot. So, not long ago, we met a guy called Dane. He told us about Conria and the punishment of the gods. That's when we realized that those events were connected to the person we're searching for. Zhongli, you're a god. You've lived through thousands of years of history. Surely you experienced the incident? I cannot say. Why? You can't even give us a thread of information? This is so important to us. I understand. But I must apologize. This is my contract. You mean another past grievance? Like the incident with Ejda? Too painful to talk about? It was signed before it all began. I have always honored the contract, and kept my silence.
सॉरी गाइस, वो जरा मम्मी बुला रही थी तो खाने के लिए। क्या बोला इसमें कॉन्ट्रैक्ट है? Was signed before it all began. I have always honored the contract. How can you be like that? You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. But as the god of contracts, I cannot go back on my word. Well, I'm not out of character. Would you be ready to find out? It appears your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past, many secrets that lie hidden. They have been eroded by time, forgotten by the people, abandoned. But you are capable of finding them and bringing them into the light. Those who come to witness will witness. Those who are born to remember will remember. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path, everything has meaning. पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पर। यहाँ मेरा पहला स्टार्ट हुआ था क्या नाम है इसका, ये वाले बोर्ड का, ये वाले स्टैच्यू ऑफ साला। तो अभी मुझे क्या मिला है? मुझे नहीं लगता कि उसको अपग्रेड करना इतना आसान है। Chances to prep. इसके लिए नहीं, मुझे इसके लिए रुकना पड़ेगा या फिर इसके लिए। एक खुल जाएगा। ये गॉड ऑफ जियो की याद दिलाता है। तो अभी मैं क्या करूं? चलो ठीक है, उसका इंतजार करके वो ये तो 12 बन गया ना। तो चलो अंडरग्राउंड जाते हैं, देख के आते हैं क्या हाल चाल है वगैरह वगैरह। टू अंडरग्राउंड। चला भैया, क्या होते है देखा था। ना 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 ना, कितना अंधेरा क्यों है बे? नहीं हो रहा है, किसी चीज से तो हो रहा था।
Wind Blade! पता नहीं किससे होता था मगर होता था। अरे क्या जाने दो ना। Okay, we find this. ओह नई चीजें। ये नहीं है, ये रहा। The smell coming from the mines has changed again. यार चलो यार भूख लग रही है, पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद गेम को अपग्रेड करेंगे। और ये देखो 50 तक होने तक ये 90 करने नहीं देगा मेरे को, ये ट्रैवल कैरेक्टर को। और ये 70 तक का पड़ा है, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। और इसका तो दोनों के दोनों 70 तक, इसको एटलीस्ट 80 तो करना पड़ेगा मुझे। और ये भाई साहब तो बैठे हैं लाइन में, वेपन देखो 60 पे आ गया है, और इसका तो 50 पे आता है। इसको एनहांस करना चाहिए मगर उसके मटेरियल्स नहीं है, वो भी मिल जाएंगे। तो अपग्रेड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। पहले जो होता है वो हमसे जो हो पाएगा वो देख लेते चलो। रिपोर्टेशन के थ्रू मतलब क्राफ्टिंग के थ्रू वो बना सकते हैं ना क्रिस्टल्स वगैरह, वो सब चीजें ट्राई करेंगे। चलो देखते क्या होगा। होल्ड ऑफ शाइनिंग का जो है ये वाला, तो मुझे ये तकरीबन 6 चाहिए, और इसके लिए तो 6 चाहिए। चलो हम लोग बना सकते क्या देखते हैं। अरे नहीं बबुआ, ये वाली चीजें नहीं। होल्ड ऑन सेट, मेरे पास कितने हैं वो? आर यू सीरियस? सिर्फ एक ही पड़ा है? आर यू सीरियस? चलो बाद में जाके लेंगे, ठीक है। क्या बोला था ये चीज, ये जो लाल कलर का जो है इसको हम लोग बाद में लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से कहाँ गया। पायरो कैरेक्टर यही सही तो था, ये रहा। इसको नेटिव बना के रखूंगा क्योंकि मुझे ये बाकी सब चीजें। और ये क्या होल्ड ऑन, मुझे पता चल गया। ये बना दे। किसका जो इसको 40 है ना, चलो मिल जाएंगे। एक तारा का इस्तेमाल कर लेंगे। चलो किधर है तारा? तारा 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 यूज नहीं करना चाहिए जानता हूँ, मगर फिर भी एक यूज करने में कोई फायदा, एक प्रॉब्लम है। चलो अभी एक और भी बना लेते हैं। लो 5 बन गए। और हाँ गाइज, मैं बताना भूल गया कि मैंने ये अंडरग्राउंड पूरा का पूरा क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। पहले से ही कर चुका हूँ। सॉरी गाइज, मैं तब स्ट्रीमिंग चालू नहीं कर पाया क्योंकि मेरा दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ खाली पूरा अपग्रेड करना चाहता था, इसको पूरा का पूरा अनलॉक करना चाहता था। तो ठीक है, तब तक ये कितने घंटे में हो जाएंगे? 18 घंटे 160 होने के लिए। क्या मानेगा, कितना देर लगाता है रे तुम? चलो कोई बात नहीं। तो गाइस ये सब चीजें तो हो गए बहुत सारी। वैसे ये करता क्या है? Wait, to skin not challenge here. I like it. North King, no, Wolf King. Yeah. इसमें सब मिल जाते हैं, क्या बात है यार। होल्ड ऑन अ सेकंड, दुकान पे इसमें तो देखिए प्राइस में अभी तो कितना कितना 63 है, और मैंने 61 वाले को बजाया था।
जो अभी जो मॉन्स्टर था वो 61 वाला था। ये वाला था क्या? नहीं, कुछ ज्यादा ही बड़ा और भयानक था। ये वाला तो नहीं है और ये वाला तो बिल्कुल नहीं। ये वाला डाउट आ रहा है मगर ना, ये वाला है वो। है 62 कब हुआ है? अभी तो 61 देखा था। वो गाइस क्या देख रहे हो? ये जियो शेल्स का कितना जियो कैरेक्टर के लिए तो पूरा का पूरा तबाही है। और ये फेरो कैरेक्टर के लिए फेरो फेरो हो गया। फेरो क्या है नाम है, भूल गया, पता ही नहीं चलता। और ये बर्फीला वाला तो पता नहीं। चलो गाइस मैंने इसको लोकेट कर दिया है, ठीक है। What should I try? तो गाइस ये था आज का स्ट्रीम। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ यार, इस बार तो पूरा का पूरा विजुअल और थियरीज उसमें ही चला गया यार। दिमाग का दही पाला हो गया। चलो गाइस मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। और हाँ, मैं खाना खाने जाऊँ। और हाँ, शायद आज मतलब कि खाना खाने के बाद शायद मैं स्ट्रीम करूँ शायद। और हाँ गाइस, मजा जरूर आने वाला है। गाइस मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना मत